Good evening, everybody. Am I perfectly audible and visible to all of you people? Please once, do let me know in the comment section if I am perfectly audible and visible to all of you people, so that we can actually begin this particular session over here quickly, guys. Once hit the like button and share the session with other people. We are going to discuss some very important point actually over here. Accepted and frozen idea that was not able to understand further process from my side. Yes, so don't worry actually. जो है वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा तनय भाई, so don't worry at all. Okay. So first of all, let me just clarify this particular thing before going to the cutoffs. That in this particular cases, हमको जो मिल रहा है basically, that is the tentative cutoffs. Obviously, these are not official data. What we have obtained from various students, because I have done counseling sessions actually for over 500 almost students now, and I have collected basically data from them, and on the basis of that actually I am making this particular session. So कुछ जनरल ट्रेंड्स जो पहले जो चैनल पे नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करने को दबा देना, बिकॉज विदाउट सब्सक्राइबिंग यू कैन नॉट एक्चुअली कमेंट. सो क्विकली जस्ट सब्सक्राइब. I will comment on everybody, so don't worry about this particular thing. कुछ peculiar trends जो observe हुआ है actually इसमें, पहले तो उसके बारे में जो है बात कर लेते. The first thing as I have observed is the decline in cutoff, right? For general category, what we have found is significantly lower than the other categories. What does it mean actually? इसका मतलब देखो यही होता है कि मान लो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो लास्ट राउंड के कंपैरिजन में, in comparison to the last round, say second to third round, whatever has been declined actually, third to fourth round the decline has been even smaller, especially observed in higher scores. For example, a score dropped from the cutoff dropped in case of say IIT, actually say 700, IIT Bombay say for particular branch that is 715, say 710, something like that, very low amount of. But if I talk about the other branches, other categories like even OBC, EWS and SC, ST especially, we have observed a huge drop in cutoff. Decline in cutoff for some higher IITs like IIT KGP is far more than that in case of IIT Roorkee and IIT Hyderabad. For example, this is a particular trend that is observed also. Number two, that is, first of all, I am talking about the trends that I have observed. After that, I am going to the IIT wise cutoff actually, which I am going to discuss over here. So quickly, once again, hit the like button in case you haven't yet. Okay. IIT Madras environment or NIT Trichy transfer core placement. In both actually core placements are there. Okay. IIT Madras environment also 100% core placement, NIT Trichy also 100% core placement. So up to you, Anurag, which subject you like. Okay. So quickly, once guys, hit the like button and share the session. So for example, IIT Kharagpur this year, I have observed that the cutoff has declined a lot actually. बहुत ज़्यादा जो है cutoff decline कर गया है IIT Kharagpur का in many branches actually. We will talk about that particular thing. IIT Dhanbad mtech civil engineering versus IIT Guwahati water resource, which is better? I will go with personally Guwahati water resource and retain it, because I don't know in Dhanbad civil engineering, okay, what I have got. NIT Rourkela is good in terms of placement. I will bring a separate session for NIT, so don't worry about that. IIT third is IIT Tirupati, IIT Palakkad and IIT Ropar cutoff actually declined a lot, huge decline. Number four, we have observed that IMD, that is your infrastructure management, geotech and geoinformatics, these three branches cutoff declined significantly, but that for data science and allied branches actually went very high. For example, what we have observed actually, that data science in Palakkad even, right, the IITs like IIT Palakkad and stuff actually, where data science branches are there the cutoff went crazy high. I mean, compared to the last year also, if I compare actually, so that is basically showing the drift of IITM, BTCM or TE for preparation. You are going IIT Madras for taking preparation. It's a bad idea itself actually. Okay, money. In both of the cases, you will be facing a huge amount of coursework. नीलेश, IIT खड़गपुर में प्लेसमेंट खराब है इसलिए कट ऑफ कम होगा. नहीं सर, प्लेसमेंट खराब नहीं है सर कहीं पे भी, बट द पॉइंट इज क्या है सर, देखो IIT खड़गपुर में ना, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड कि जो ब्रांचेस है वही पुराना टाइप ऑफ जो मेनली ब्रांचेस एंड ऑल दिस थिंग्स, बट कई सारे न्यू IITs में
जैसे कि आईआईटी रुड़की बोलो एंड मेनी सच प्लेसेस एक्चुअली, जहां पे कि न्यू टाइप ऑफ जो ब्रांचेस है उसमें काफी ज्यादा जो है फोकस किया गया है. So that is actually one point which is observed over here. Quickly guys, once hit the like button and share the session with the other people please. Is IIT Roorkee good for non-core placement? Yes, certainly it is very very good. And the fifth point I have told is preference played a very significant role, because I have seen this many occasions that actually a person who has put something in a higher preference, even मतलब किसी का मान लो स्कोर ज्यादा है, he or she hasn't got it. So talking about IIT Bombay, again this data tentative plus minus 5 can occur obviously, because not 100% of people have done counseling from me, right? But I have done counseling for over 500 students actually, so from that particular thing a data kind of we can say. IIT Bombay SAG प्लेसमेंट कैसे जाता है? ठीक ठाक जाता है actually, it's not bad actually, it's good. IIT Bombay है तो अच्छा ही है. 419 OBC any chance of getting IIT Patna in additional rounds? Yes, there are chances. Okay. These are general cutoffs and also category wise cutoff we will discuss. Transportation System Engineering IIT Bombay 715, Geotechnical 690, but again Geotechnical में इससे कम में भी किसी किसी को मिला है, बट इससे ज्यादा भी किसी किसी को नहीं मिला है. वाटर रिसोर्स अराउंड 650, स्ट्रक्चर इज स्टिल एट 728, but it will come down below 700. That's my prediction after the additional rounds. Ocean Engineering 649, Remote Sensing 645, Construction Technology Management 725, Aerospace Structure I have observed, I don't know about the other department, 685, one of the students actually. Energy Science actually around 690 cutoff. Environmental Science and Engineering 674. These are already for general categories. I will talk about the other categories also in a minute. Talking about GNR, that is 698, which just has released their cutoff in the previous round. Additional Industrial Engineering and Operation Research IEOR, look at its cutoff, it still went as high as it expected, 746. So around 740 के आसपास पास का कट ऑफ जा रहा है, because you know the reason is obvious, because of the 100% placement and 100% 10 LPA plus placement. Okay. IIT खड़गपुर में मैनेजमेंट वही खराब है पीजी के लिए. लास्ट मंथ पीजी हॉस्टल को लेके बवाल हो गया, इलेक्ट्रिकल छोड़ के बेकार है. यस नीलेश, आपको पता होगा बेहतर तरीके से, बट द पॉइंट इज एक्चुअली द थिंग इज दैट यू नो IIT खड़गपुर की प्लेसमेंट बिल्कुल ही खराब नहीं है. ओके, 100% प्लेसमेंट पिछले साल भी रिकॉर्ड हुआ है इन मेनी डिपार्टमेंट्स. ओके, बट ओनली द प्रॉब्लम इज दैट IIT खड़गपुर में क्या है कि इतने सारे डिपार्टमेंट है, तो यही सर एक प्रॉब्लम होता है, जैसे हॉस्टल वालों एंड ऑल दिस थिंग्स. बट येस, प्लेसमेंट वाइज इट इज स्टिल टॉप नॉच. ओके sir, there is no student in IIT Dhanbad, there is only mention civil engineering. That's why I'm saying na PK that you don't know that what you are being offered, so it's better कि जहां पे ऑफर हुआ है वही वाला ऑप्शन लेके जो आगे बढ़ना. राइट, सो आगे बढ़ते हैं गाइस फ्रॉम द नेक्स्ट वन, दैट इज corrosion science and engineering. As far as I remember actually, and this urban systems and all, they have been offered actually under a gate score of 550. 550 के नीचे ऑलमोस्ट इन लोगों के गेट स्कोर में आ चुका है, ये हम देख चुके हैं. Talking about IIT Madras, Building Technology and Construction Management is still high, 736 for general category. But for OBC category, this particular thing has come at around 680 and something like that. Environmental Engineering 684, Geotechnical at 689. So you can find one particular thing कि Environment और Geotech के बीच में पहले काफी ज्यादा फासले होते थे, बट अभी जो है Environment और Geotech के बीच में फासला बहुत कम हो चुका है. अराउंड 4 और 5 गेट स्कोर जो है, इतना ही बस डिफरेंस है. हेलो स्टार, सर IIT धनबाद वर्सेस NIT Trichy वर्सेस IIT पटना इन ई डिपार्टमेंट. आई विल पर्सनली गो विथ NIT Trichy. ओके सर, आई गॉट IIT Guwahati वाटर रिसोर्स 558 स्कोर EWS. कैन आई टेक रिस्क इन एडिशनल राउंड फॉर बेटर अपग्रेडेशन? यस, ऑब्वियसली यू कैन. हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्स एट IIT Madras 657 गया है. स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग IIT Madras 729 जनरल कैटेगरी इफ आई टॉक अबाउट, बट structural engineering general EWS and OBC category has come down just below 700. ये आ चुका है guys. Obviously as I told that it's very difficult to predict SC and ST category cutoff. मतलब कोई ट्रेंड भी नहीं आता उनका, क्योंकि इसका इतना कम सीट होता है. मान लो किसी एक का बहुत अच्छा लग गया, किसी का, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. दैट्स व्हाई आई एम नॉट पुटिंग दैट इन डिस्कशन. ओके, कंप्यूटेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल मैकेनिक्स, लुक एट इट, इट्स स्टिल 775. इट्स वेरी हाई एक्चुअली, मतलब 750 के ऊपर तो ये जाएगा ही, मान के चलो लास्ट राउंड तक भी ये गिरेगा. इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग अलाउड है, बिकॉज पीपल नो एक्चुअली दैट यू नो आई एम गोइंग टू गेट मोर देन 15-20 LPA पैकेज, सो हु इज नॉट गोइंग टू
you know accept this particular things. Like 50 people are watching and only 22 likes. फटाफट से एक बार लाइक और शेयर कर दो जल्दी जल्दी. आईआईटी गुवाहाटी से ट्रांसपोर्टेशन करना है, हाँ बहुत अच्छी बात है सर. सर आईआईटी मद्रास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आई गॉट, शुड आई गो फॉर इट? एक्सीलेंट, ऑब्वियसली यू शुड गो फॉर इट आयुष, until unless you don't have any location preference. एनी चांस ऑफ आईआईटी बॉम्बे और रूड़की स्ट्रक्चरल? देखते हैं सर. अभी बॉम्बे स्ट्रक्चरल में कैटेगरी प्लीज मेंशन. मीत देसाई प्लीज मेंशन योर कैटेगरी ऑल्सो. Okay, ocean structure at IIT Madras had fallen down to 651 and ocean technology has fallen down to 643. IIT खड़गपुर के बारे में बात करता हूं तो hydraulic and water resource engineering 631 तक गिर चुका है, as I was saying actually you. And if I talk about EWS and OBC category, even below 600 gate score, मतलब 599, बहुत ज्यादा ना डिफरेंस नहीं हुआ EWS category and general में for hydraulic and water resource engineering department. बताऊंगा सर, एक एक करके सब बताऊंगा, डोंट वरी. प्लीज जस्ट मेंटेन द डेकोरम एंड प्लीज गाइस एक बार लाइक और शेयर कर दो, इतना तो कर ही सकते हो फटाफट से यार. जल्दी छोटा सा सेशन रखेंगे हम, बहुत ज्यादा बड़ा सेशन नहीं रखेंगे. 11 बजे छोड़ देंगे डेफिनेटली आप लोगों को भी. सो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इन आईआईटी खड़गपुर, लुक एट इट, इट्स कट ऑफ अगेन एट फॉलन डाउन टू अराउंड 702. एनवायरमेंटल एंड व्हाट आई हैव ऑब्जर्व दैट आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी हैदराबाद का जो कट ऑफ है, जो मैंने पहले आपको बताया था, जो पहले एक टाइम पे इमेजिन भी नहीं कर सकते थे हम कि खड़गपुर से ज्यादा कट ऑफ उन लोगों का है, बट इस साल हुआ है गाइस. दैट इज yes, of course Akshay, very good, it's a very good profile actually for machine learning especially, but you have to learn also a lot of new things. Data science also is a very good option from this particular geoinformatics branch, because there is a lot of application of statistical things actually in this branch. Okay, and also AI एंड मशीन लर्निंग तो है ही सर, क्योंकि जीपीएस जीआईएस का इसमें इस्तेमाल होता है, दैट्स व्हाई. ओके, सो नाउ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज एक्चुअली आईआईटी खड़गपुर का. देखो आईआईटी खड़गपुर में क्या हुआ ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया काफी सारी चीजें, बिकॉज द ब्रांचेस आर सो हाई इन नंबर. एंड इस साल यही मैं ट्रेंड आपको भी पहले ही बताया हूँ कि जो आपका व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज रिगार्डिंग योर हैदराबाद एंड रुड़की, इन दोनों का कट ऑफ जो है उबर के जो है बाहर आया गाइस. बहुत ज्यादा बढ़ गया है सर इन दोनों का जो कट ऑफ है. दैट इज क्वाइट ऑब्जर्व एक्चुअली, राइट, जो बहुत सारे केस में ऑब्जर्व नहीं होता है, बट इस केस में जो है ये काफी ज्यादा ऑब्जर्व हुआ है यार. आप लोग जो है एक बार लाइक और शेयर करते रहो. सर नितेश सर, आई हैव 705 जनरल सिविल, आई गॉट ऑफर इन दिल्ली एनवायरमेंट, व्हाट आर द चांस ऑफ गेटिंग जियोटेक एंड स्ट्रक्चर इन फर्दर राउंड्स? यस, यू विल गेट सर्टेनली जियोटेक तो सर आपको आराम से मिल जाएगा. एनवायरमेंट का कट ऑफ इनफैक्ट जो है आपको 705, ऑल्दो आपको स्कोर है जो है आपको, लेकिन इससे भी कम स्कोर में एक्चुअली मिल गया था. स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग विल सी 719 स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो है आईआईटी खड़गपुर में. लैंड एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग 598, लुक एट इट मैन. एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग 519 में मिल गया है. लुक, अर्थ सिस्टम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 532, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन मैनेजमेंट 602, वेरी लो कट ऑफ एक्चुअली. This cutoffs I actually don't know actually, that's why I didn't put it over here. Talking about IIT रुड़की, मुझे कुछ ही ब्रांचेस के जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग एडमिशन ले चुके उतना पता है. स्ट्रक्चर 721 गया है अभी तक कट ऑफ, विच इज हायर देन IIT खड़गपुर, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. But its OBC and EWS cutoff has fallen down below 700. Transportation 709 IIT रुड़की, but again EWS और OBC cutoff has fallen down to 700. मतलब 700 के नीचे 670 के आसपास जो है EWS OBC का कट ऑफ जा रहा है. सॉइल डायनामिक्स 622 में मिल गया है, राइट, जनरल कैटेगरी में. एंड EWS में एक्चुअली जो है अराउंड 600 में जो है आपको मिल जा रहा है. एनवायरमेंट एट IIT रुड़की, पीपल हैव गॉट इट एट अराउंड 660 के आसपास गेट स्कोर में. बट देयर इज अ ह्यूज कैच एक्चुअली ओवर हियर. मेनी पीपल आई फाउंड दैट IIT रुड़की में उनको एनवायरमेंट नहीं मिला, even having a gate score over 700, because they have put environment at the last choice. ये actually main reason है. I'm coming to all the IITs guys, don't worry about it. तो Kumar is saying, can I get PE or systems and control in IIT Hyderabad in 5th round or in additional round? 424 में तो सर मुश्किल है. Okay, additional rounds में हो सकता है सर. IIT गांधीनगर I'm telling you actually. Okay. सर 655 एनवायरमेंटल मिल गया, देखो 655 में इनको एनवायरमेंटल मिल गया, देखो. बट देयर आर मेनी पीपल जिनको 680 में भी एनवायरमेंट नहीं मिला है, बिकॉज इन्होंने हो सकता है थोड़ा हायर प्रेफरेंस में रखा था एनवायरमेंटल को, दैट्स वाई. किसी ने मान लो एकदम लास्ट में रखा है, दैट्स वाई, दैट इज द मेन थिंग, राइट. सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि +-510 जो है वो हो सकता है. यस, यू शुड अप्लाई फॉर CCMT ओनली. कुणाल कुमार
सर 668 स्कोर जनरली चांस ऑफ आईआईटी बॉम्बे आईआईटी रूट की स्ट्रक्चरल, आईआईटी बॉम्बे स्ट्रक्चरल मिलना तो मुश्किल है, बट रूट की स्ट्रक्चरल भी सर इस बार तो मुश्किल एडिशनल राउंड में हो सकता है. ओके. Be in civil and structural engineering. For me, CCMT available choice are only 60, but for others, I contacted helpline. 176 चॉइस कौन फिल करेगा यार? मेरे पास जो काउंसलिंग कर रहा है तो उनको तो मैं 10 या 12 चॉइस बोलता हूं और उसी में से उसका हो जाता है, गारंटेड है. 176 चॉइस में क्यों फिल करूं? पागल हूं क्या मैं? Why 176? If anybody is doing 176 choices, right, that means he is not sure. उसको कोई श्योरिटी नहीं है, मतलब उसको सिविल ही वो सिविल में है, ये भी वो श्योर नहीं है कि वो सिविल में है कि दूसरे ब्रांच में है. ओके. 619 में यस देर आर चांसेस एक्चुअली फॉर आईआईटी बॉम्बे रिमोट सेंसिंग, बट एडिशनल राउंड्स में. Talking about IIT Guwahati में as I can see structure people have got at around 665 gates को जनरल कैटेगरी. तो जिनको एक टॉप IIT में स्ट्रक्चर पढ़ना है, he or she can look forward to IIT Guwahati structure. बट अगेन यहाँ पे भी एक मैटर है सर, राइट? वही तो यस सोहन, एक्चुअली आई वाज सेइंग 176 चॉइस. मैं जिनको भी रिकमेंड कर चुका हूँ मैक्सिमम 15 चॉइसेस जो है रिकमेंड कर चुका हूँ, इससे ज्यादा कभी नहीं. ओके. विच NIT इज बेटर फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग? ऑब्वियसली त्रिची. ट्रांसपोर्टेशन, बट ऑब्वियसली दैट इज टू बी अवेलेबल फॉर योर स्कोर ना. आपका मान लो गेट स्कोर है 300 और आप NIT त्रिची में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो या स्ट्रक्चर के लिए, तो ऑब्वियसली दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? कुछ टॉप IIT मिल सकता है नीलेश भाई, बिल्कुल मिल सकता है. 100% यू कैन गेट 595 EWS में जो है आपको टॉप IIT में तो 100% मिल सकता है. फॉर एग्जांपल IIT गुवाहाटी श्योर शॉट है, राइट? IIT गुवाहाटी में ट्रांसपोर्टेशन एट अराउंड 660 गेट स्कोर मिल जा रहा है एक्चुअली, राइट? नैनो टेक्नोलॉजी कट ऑफ आई डोंट नो किरण, आई शुड नॉट से दैट टू यू. अभी तक मुझे पता नहीं है कि नैनो टेक्नोलॉजी कैसे, बिकॉज देखो पता तब होता है ना सर. मैं तो मेरे साथ तो डायरेक्टली किसी IIT का कांटेक्ट नहीं है. मेरे पास मान लो बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, वो एक ही ब्रांच ले रहे हैं, तो 10 12 15 स्टूडेंट एक ही ब्रांच ले रहे हैं, तो उनका जो स्कोर्स है उसको मैं रख रहा हूं, एंड दैट्स व्हाई. यस IIT पलक्कड़ डेटा साइंस जो है, एज आई वाज सेइंग एक्चुअली, इट्स स्टिल ओवर 700, बट यस देयर आर चांसेस राहुल कि IIT पलक्कड़ का डेटा साइंस का कट ऑफ इस बार बहुत ज्यादा हाई गया है पिछले बार की कंपैरिजन में. लास्ट ईयर ऑल्सो 650 अराउंड में लास्ट तक एक्चुअली जो है. Geotechnical environmental branches for me. There are no choices like transportation, geotechnical environmental branches for me. No, fine. So the point is, what's your gate score? Please mention that dear. That's what I was saying. Okay. So environment actually people have got over here. Talking about IIT Hyderabad. Okay. IIT हैदराबाद स्ट्रक्चर पीपल हैव गॉट अराउंड 708. IIT पलक्कड़ जो डेटा साइंस है 720 तक आसपास जा चुका है अभी, 730 तक. तो आई थिंक 701 एडिशनल राउंड्स में हो सकता है आपका, राइट? 730 तक गया है वो डेटा साइंस, तो इट्स वेरी वेरी हाई. मोर देन 750 तक ही जाता है एक्चुअली, फिर भी जो है इस बार 730 तक गिरने का चांसेस है, ऐसे लग रहा है. वर्सेस गुवाहाटी वाटर रिसोर्स. PK, I will personally go with Guwahati water resource and retain it because I know that I will personally go with water resource because I like environmental subjects and all. But if anyone is interested in structural dynamics actually, then he or she should choose systemic vulnerability. और systemic vulnerability पे क्या है, placement उतना बढ़िया नहीं है, to be very honest. ये basic point है. IIT हैदराबाद स्ट्रक्चर 708, एनवायरमेंटल 659, ट्रांसपोर्ट 684, ई वेस्ट मैनेजमेंट एट अराउंड 529 गेट स्कोर में जो है मिल जा रहा है. सस्टेनेबिलिटी भी एंड ऑल भी 550 के नीचे आराम से आपको मिल जा रहा है. टॉकिंग अबाउट IIT तिरुपति स्ट्रक्चर पीपल हैव गॉट. IIT तिरुपति इज वन ऑफ दोस न्यू IIT जिसमें लोग आराम से 550 तक भी स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट कर रहे हो. मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जिस रेट से ये फॉल कर रहा है, आराम से 550 गेट स्कोर में स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा जनरल कैटेगरी में, राइट? इफ एनीवन नीड्स टू मतलब नीड स्ट्रक्चर एंड ऑल एक्चुअली आराम से मिल जाएगा आपको. ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 535 तक आ चुका है एक्चुअली, राइट? लाइक IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास कुछ भी मिले तो जिंदगी बन जाए, बट कौन सा राउंड तक वेट करूं. 595 EWS में डेफिनेटली सर
दिल्ली में एक्चुअली जो है, या फिर वाटर रिसोर्स तो डेफिनेटली मिल जाएगा सर आपको 595 ईडब्ल्यूएस में बॉम्बे। आई डोंट नो आप वाटर रिसोर्स के लिए अप्लाई किए हो कि नहीं नीलेश भाई, बट डेफिनेटली वाटर रिसोर्स तो आपको मिल ही जाएगा। वाई के शर्मा सर, आईआईटी गुवाहाटी से ट्रांसपोर्टेशन करना सही है? बिल्कुल सही है सर, क्यों नहीं, बिल्कुल, इट्स डेफिनेटली इट्स एज अ गुड प्लेसमेंट। But currently, Tirupati is definitely slightly better. Sir, what to choose, IIT Roorkee versus IIT Kharagpur for transportation? Currently, if I talk about, Roorkee is faring better in terms of transportation. If I talk about environment and water resource, जो है ये 480 470 तक गिर जाएगा तिरुपति में, that I'm saying. IIT Bhubaneswar structure is still at 620, transport 556, water resource at 529. I got Geotech Hyderabad. Can I expect placements? Obviously, it's good actually. Geotechnical Hyderabad का भी जो कट ऑफ में देख रहा था एक्चुअली, दैट वाज क्लोज टू 670 के आसपास पास में जो है आराम से मिल जा रहा था। आईआईटी मंडी स्ट्रक्चर 571, आईआईटी रोपर स्ट्रक्चर 541 में मिल गया, वाटर रिसोर्स जो है 503 में जो है मिल गया। बट संकेत आप जो है नेक्स्ट राउंड तक भी जो है वेट कर सकते हो इफ यू वांट। एंड आईआईटी धनबाद सिविल इंजीनियरिंग 513 में, एनवायरमेंटल 498, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, दैट व्हाट एक्चुअली वी हैव गॉट। एंड बाय द वे गाइस, जिन लोगों को अभी तक दोज पीपल हु डिडंट डू 1:1 काउंसलिंग एंड स्टफ, जल्दी जल्दी जो है मैं हर रोज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ यार। 63 पीपल आर वाचिंग एंड ओनली 31 लाइक्स, 50% पीपल्स आर बिना लाइक के। एक लाइक ठोकने में सर क्या ही प्रॉब्लम हो रहा है? Sir, please, will 5-year gap after BTech placement in MTech in structural plan? Yes, it actually is going to matter, but you have to be prepared actually. आपको जो है प्रिपेयर रहना है। ऐसी बात नहीं है कि आपको जो है कोई डांटेगा, बस आपको एक कहानी के साथ रेडी रहना है। That's actually the thing, to be very honest. एक कहानी के साथ आपको रेडी रहना है कि सर मैं जो है कुछ काम कर रहा था एंड ऑल दिस स्टफ। एक्चुअली you have to be ready with a story with yours. स्टोरी ऑफ योर्स एक्चुअली। अगर वो स्टोरी आपका रेडी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास आईआईटी दिल्ली एंड ऑल दिस थिंग्स, इनका भी कट ऑफ है, तो मैं वो भी आपको जो है बता देता हूं। आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी गांधीनगर। ओके सर, 558 यूनिवर्सिटी आईआईटी गुवाहाटी स्ट्रक्चर मिलने का चांसेस क्या है? सर बहुत बहुत मुश्किल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दैट इज आईआईटी 558 में तो सर मुश्किल ही है। ओके, सो क्विकली गाइज, वंस लाइक कर दो जल्दी से जल्दी। टेलीग्राम चैनल जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारे जॉब एंड जो जनरल अपडेट्स है वो मैं पोस्ट कर देता हूं। एंड फॉर 1:1 काउंसलिंग सेशंस, क्योंकि जो है लोगों के बहुत सारे डाउट होते हैं, 1:1 काउंसलिंग के लिए जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आफ्टर दैट डीएम मी। डीएम में सिर्फ इतना ही लिखना, इंटरेस्टेड इन 1:1 काउंसलिंग। 2 दिन के बाद अगर रिप्लाई नहीं आया तो वही मैसेज कॉपी पेस्ट करना, कोई दूसरा मैसेज मत डालना, सर प्लीज, सर ये कुछ नहीं, सिर्फ इतना लिखना, सर इंटरेस्टेड इन 1:1 काउंसलिंग, दैट्स ऑल। 533 जनरल में आईआईटी हैदराबाद क्लाइमेट और सस्टेनेबल मिलने के चांसेस पूरा का पूरा है गाइज। ओके, लाइक और शेयर कर दो जल्दी से जल्दी। जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के, उन लोगों के लिए भी हमारे कोर्सेस अवेलेबल है, जो कि बहुत ही बढ़िया कोर्सेस है, जो मेरे पर्सनल ऐप में ही अवेलेबल है। कॉन्सेप्ट थ्रू द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ऑल्सो यू कैन अवेल दैट पर्टिकुलर थिंग। आईआईटी कानपुर का मैं नहीं लिखा जानबूझ के, क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ आईआईटी कानपुर का कट ऑफ देख के। देख रहा हूँ सर एक का जो मतलब इतना ज्यादा गैप है, इतना ज्यादा दे हैव एम्फसाइज्ड ऑन योर इंटरव्यू एंड ऑल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स। मैं इसलिए नहीं लिखा एक्चुअली इनका कट ऑफ, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब है कि मान लो स्ट्रक्चर में देख रहा हूँ, आई वॉज वॉचिंग इन स्ट्रक्चर अराउंड 670 और 690, 679 I guess somebody has got structure in general category, right? But a person with 700 gate score, he did not get structure, more than 700 उनको नहीं मिला, that's why it's so huge actually। 715 720 में भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, I think the network actually went due to some reason. Okay, the network actually went due to some reason actually, but let's talk about the IIT Delhi one. So IIT Delhi के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, then structure actually the last cutoff that I have observed is 710 for general category. For transport, if I talk about, as far as I last data has observed, it is 698, very close, and environment is again 693, very very close actually about all these things. And also CTM in IIT Delhi, if I talk about CTM, then it went actually 715, that is slightly higher than structure. Okay,
So that's all actually about today. So again we are going to meet and IIT गांधीनगर के लिए अराउंड 630 के आसपास जो है कट ऑफ जा चुका है फॉर IIT थिंग्स. ओके, सो एंड IIT गुवाहाटी एनवायरमेंट वर्सेस NIT त्रिची, NIT सूरतकल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट विच इज बेटर. I will personally go with NIT सूरतकल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट if कोर प्लेसमेंट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी. अगर रिसर्च वगैरह करना है तो गुवाहाटी एनवायरमेंट जा सकते हो, राइट. So next is GATE score 693, preference 1 of geotechnical engineering. Any chance of IIT Bombay in 5th round? Yes, definitely you can get it actually. Definitely, but it actually depends upon that how much where you have placed it, Manoj. Okay. Done B in and my available choices in SimC. Okay, fine. So I will just end the session in 2-3 minutes. Okay. एक बार जल्दी लाइक और शेयर कर दो. IIT दिल्ली कट ऑफ आई हैव ऑलरेडी मेंशनड एक्चुअली ओवर हियर. IIT दिल्ली के जो कट ऑफ है वो मैंने मेंशन यहाँ पे कर दिया है. स्ट्रक्चर 710, ट्रांसपोर्टेशन 698, एनवायरमेंट 693 एंड CTM is 715. If I talk about the EWS and OBC category cutoff, then for structure actually it is 680 के आसपास, ट्रांसपोर्टेशन 675 के आसपास, environmental 660 for EWS and OBC, and CTM also around 690. So there is not much difference actually in general and EWS category cutoff. Okay. Geotech at Bombay 609, OBC very less chance to be honest. Okay, so fine, that's all. Can I prepare? Yes, I have told you PK for hundreds of times that yes, you can prepare. Sir, Roorkee geospatial, any idea? I don't know about the cutoff, dear. About geospatial engineering. Sorry यार, my video was off actually. किसी ने बताया नहीं यार, मतलब किसी को मुझे देखना ही नहीं सब. चलो ठीक है यार. So yes, yeah. Am I perfectly audible and visible, guys? Please do let me know in the comment section once. Okay. Yes, we will just end this session in a minute because I have discussed all the cutoffs. Okay, एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दो. त्रिची चॉइसेस इन जियो से. यस मोहन, सो ऑन दैट ओकेजन आपको पूरा चॉइस फिलिंग तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ ऑब्वियसली. दैट इज नॉट माय जॉब टू डू हियर. दैट इज फॉर 1:1 काउंसलिंग सेशन जो है वहाँ पे सारे मैं चॉइस फिलिंग करवा देता हूँ. ओके, आपके लिए. आई गॉट आई कैन आई प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देयर? इट्स डिफरेंट संकेत, इट्स डिफिकल्ट संकेत, राइट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सर 458 EWS कोई IIT स्ट्रक्चर मिल सकता है? हाँ, IIT रोपर वगैरह देख सकते हो, एंड ऑब्वियसली धनबाद वगैरह एंड ऑल दिस थिंग्स, इसमें आप जा सकते हो. IIT धनबाद वगैरह अगर आप चले जाओगे तो उसमें क्या है कि अगर आप बहुत अच्छे परफॉर्म करोगे इन योर फर्स्ट सेमेस्टर एंड ऑल, तो आपको जो है मिल जाएगा स्ट्रक्चर, राइट. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर फॉर सो लॉन्ग गाइस. टेक केयर एंड आई होप टू सी यू in the next session actually. IIT core placement, if you talk about, obviously I will go with Dhanbad environment, Medjay NBS, because IIT भी technology and development में core placement तो होता नहीं है. Roorkee structure पर Kharagpur structure, I will personally go with Roorkee structure this time. Chandan. Okay, thank you for being here for so long. And IIT Gandhinagar, as somebody was asking, it is actually civil engineering के जो general cutoff है, that was around your 615 general cutoffs, 615 और 550 के आसपास EWS OBC कैटेगरी में जो है आराम से मिल जा रहा था, राइट. तो जो भी लोग 1:1 काउंसलिंग में बैठना चाह रहे हैं मेरे साथ, द फीस इज एक्चुअली 299. एवरीबडी आई गेस नोज दिस पर्टिकुलर थिंग. अभी तक ऑलमोस्ट मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैज डन दिस 1:1 काउंसलिंग. एंड 1:1 काउंसलिंग करने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करो, मैं लिंक दे देता हूँ, और उसमें जाके बस आपको इतना ही लिखना है, सर इंटरेस्टेड इन 1:1 काउंसलिंग, नथिंग एक्सेप्ट दैट. ये शौर्या भाटी, सर IIT गुवाहाटी और IIT मद्रास पेट्रोलियम. Look, it's very simple actually. If you are going to go with core placements, go for IIT Guwahati structure. If you want to go for non-core placements, go for Madras Petroleum Engineering. Official Sonu, please my answer. What's your question? Okay, please mention your question. और जिनका अभी तक आंसर नहीं दे पाया, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो. मैं आप सभी का आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा. Okay. I have placed it as first preference, sir, in IIT Bombay GATE score 693. That's actually the anomaly I was saying actually, कि कई सारे लोग फर्स्ट मतलब
रखने के बावजूद भी उनको नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है भाई, हमको जवाब चाहिए। आई रियली रियली वांट टू नो फ्रॉम ऑल दी कंसर्न आईआईटीज की ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज योर क्राइटेरिया, किस बेसिस में आप ले रहे हो। आईआईटी बॉम्बे जियोटेक गेट प्रेफरेंस देखो इनका 693 है, फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा है, फिर भी इनको नहीं मिला। बट मुझे पता है इनसे कम गेट स्कोर में लोगों को मिल रहा। इज आईआईटी रोपर सीट्स ऑलरेडी filled? What do you mean already filled? Obviously, suppose I have got in B, it's not showing basic branch and civil. No, no, no. I understood. I understood, Mohan. Mohan. I understood actually. Since your branch is civil and structural, that's why it's not showing actually the different branches. तो आपको वही स्ट्रक्चर में ही अप्लाई करना है जहाँ पे स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है. That's why I'm asking you, Mohan. ना, what's your gate score and category? Tell me that actually. It will be easier for me to answer you. Simple. Okay. So whatever it's, please mention in the doubt section. Okay, the time is over actually. Mandi Palakkad E458 college fifth round. Additional round there is slight chances actually. Environmental engineering you are talking about, right? Or which, or electrical engineering, what you are talking about? Geomatics, I don't know. BHU, I think it's 500 something actually it got actually. 446 EWS. Yes, you can get actually some of the non-top NITs actually. You will get it. Okay, thank you. Thank you for being here. Sorry, the connection actually went interrupted a little bit. That's why a connection is a little bit interrupting. तो आज मैं इसीलिए खत्म कर दे रहा हूँ सेशन को. 446 EWS, yes, apply like na NIT Nagpur, Bhopal, also Warangal, Suratkal, you will get in the last rounds actually. Mohan, right? So thank you for being here. We will meet actually in the next session because I think the network is fluctuating a little bit. That's why. Okay, we'll meet in the next session. Okay, don't worry about it. The next session tomorrow. Tomorrow we'll meet. Okay, no problem. Although I had successfully conveyed it, number of companies, there is no particular number of companies there. Every year